friends. This is Suparna Chakravarti representing Global Village of Indian Music powered by Real Talkies Motion Pictures and also representing Bharat Media. We all are here from across the globe to celebrate the immortal music of the legend Hemanto Mukhopadhyay, fondly known as Hemant Kumar. The masterpieces that this maestro has created, we would be presenting and talking about a few of them. We are really glad to be gathering here for such an artist today. I wouldn't take much time of yours and would just move on to the performances. So presenting Tum Pukar Lo. Hello everyone, I am Ashish Jha, and first of all I would like to thank Suparna for having me on this GVIM specials remembering Hemant Kumar on his 101st birth anniversary. And this program is by Global Village of Indian Music, powered by Real Talkies Motion Pictures. So when I think of Hemant Kumar, there are three things that specifically comes to my mind. I mean, of course, other than the music direction, singing, and everything else, there are three things that always stick with me when I think of Hemant Kumar. The first thing is the baritone. Now, Hemant Kumar was one of those singers who had really good baritone. That is one thing. The second thing that sticks with me always, two songs. First one is the Nagin. आप मुझे ये बताओ कि नागिन में जो उन्होंने म्यूजिक दिया और जो बीन का जो साउंड है नागिन में, वो साउंड, वो ट्यून आज तक any movie related to snakes, any movie related to Nagin, they always use that same music till date. Like that is something that he created as a legacy and he is remembered for that. The third thing that sticks with me is the song Vande Mataram. Majority of the time, at least I grew up listening to the Vande Mataram that was sung on Doordarshan. But the version of Vande Mataram that Hemant Kumar had is the second thing that comes closest to knowing that song from the movie Anand Mat. Because that's the entire song, first of all, which I had never heard until I heard this song completely. And the way he composed the music for that song was very unique. So that is what I would say about Hemant Kumar. And thank you once again, Suparna, for having me. And good luck with your show. Thanks. Thank you so much, Ashish. So we begin with the first performance of the evening, and that is by Bhanu Purohit. Hello everyone, this is Bhanu Purohit. I'm here today to pay tribute to Hemant Kumar, Hemanta, on his birth anniversary. When Suparna asked me to sing a song of Hemanta and speak a few words about him, I was really very excited because Hemanta is one of my favorite singers. When I think of Hemanta, the first thing that comes to my mind, one of the reasons I really love Hemanta's songs is his voice. Calm, serene, soothing. You know, koi bhi tension ho, so you listen to a Hemanta song and that tension sort of fades away. The other reason that I really admire Hemanta's singing, and this is not unique to Hemanta, many great singers can do this, but Hemanta was one of the best at it. That is to sort of mold his voice to the actor that's being portrayed on screen. So जैसे कि ये जो देवानंद साहब के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना है अपना दिल तू आवारा न जाने किस पे आएगा. You know that it's picturized on Devanand because you know there is that nutcut, happy, peppy way that Hemant Kumar sings that song. ये गाना ले लो. नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए. You know it's
picturized on Sunil Dutt because it's so mellow and just like Sunil Dutt's personality. So the song that I'm going to sing, it's one of my all-time favorites. This is जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला from the movie Pyasa, picturized on Guru Dutt. Now Guru Dutt's trait, his main characteristics, understated, restrained dialogue delivery, but it has a huge impact. And the way Hemant has sung this song, I mean, he hasn't shouted, he hasn't even enunciated the words, but just the performance is, mind-blowing. इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे. Wow, goosebumps. So I cannot do justice to this song as much as I cannot sing like Hemant, of course. But उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगे. Thank you. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली. खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली. चाहत के न हमें चाहे तो आहे सर्द मिली. दिल के बोझ को दूना कर गया जो हम खार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ. किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ. हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे. इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे. उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे. हमसे अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. What can I say about Hemant Kumar?
I'll start with Hemant Kumar, the singer, one of the most soothing voices of all time. It's so soothing to listen to Hemant Kumar sing. And then Hemant Kumar, the music director, he is probably one of the most underrated music directors. He has composed some of the best songs. One of my favorite songs of Lata Mangeshkar, Kuch Dil Ne Kaha. Kuch Dil Ne Kaha, one of my all-time favorites of Lata. And then also one of my all-time favorites of Kishore Kumar. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है. So, you know, two of my favorite songs. And he has composed many such wonderful songs. So, that's Hemant Kumar for you. A great singer and a great music director. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां. पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी. और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी. तो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां. जाती बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती रवानियां, जाती बहारें हैं. तारों की छाँव में कहले कहानियां, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के. एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के. आजा अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां. दास्तां,
दास्तां In many ways, Hemant Kumar was a standalone voice, unlike Muhammad Rafi and Kishore Kumar, who could so frequently and effortlessly assume the persona of the actors they were singing for. Hemant Kumar's voice did not necessarily lend itself to a particular personality type. He never tried to modulate himself to the actor's personality. Instead, he focused on singing his songs soulfully and such that the viewer could look beyond whether it matched a particular actor's style. And yet, he managed to sing for a wide variety of actors, ranging from Dev Anand to Shami Kapoor, and from Biswajit to Guru Dutt, with enormous success and popularity. Just consider these 4 sample songs attached to these actors. Na Tum Hame Jano for Dev Anand in Baat Ek Raat Ki 1962, Ae Dil Ab Kahin Le Ja for Shami Kapoor in the 1963 Bluffmaster, and Jaane Wo Kaise Log The Jinke Pyar Ko Pyar Mila for Guru Dutt in Pyasa in 1957, to Ye Nayan Dare Dare for Biswajit in Kohra in 1964. And you get an extraordinary insight into Hemant Kumar's versatility. Friends, as we are celebrating the 101st birth anniversary of Hemant Da today, we are not restricting ourselves to the language that is only Hindi or English. Today you will hear a couple of Bengali songs as well, and আমরা বাংলায়ও কথা বলবো, ইংলিশেও কথা বলবো, হিন্দিতেও কথা বলবো, and I'm sure you would enjoy and love this entire special episode from GVIM, which is also streamed on Bharat FM and Real Talkies Facebook page as well as the YouTube channels. নমস্কার, আমি সিদ্ধার্থ দত্ত, সিনসিনাটি ওহাইও, আমেরিকা থেকে। আজকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে যে প্রোগ্রামটি হচ্ছে তাতে আমি একটা আমার খুবই প্রিয় গান গাইব। এই গানটা দ্বীপ জেলে যাই মুভির খুবই বিখ্যাত গান, এই রাত তোমার আমার। তো এই গানটার একটা অদ্ভুত ইতিহাস আছে, যে এটা একটা রুমার ছড়ানো হয়েছিল এই গানটার শুরুতে, যে হুইসেল টিউনটা আছে, যে এটা প্লেজারাইজড। ইংরেজি একটা বইয়ের সাউন্ড ট্র্যাক থেকে এই গানটাকে নাকি তোলা হয়েছিল। ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই বলে একটা মুভি ছিল, তো সেই মুভিটারই একখানা হুইসলিং টিউন ছিল মার্চিং ব্যান্ডের। তো এই ঘটনাটা পরে প্রমাণিত হয় যেটা সত্যি নয়, তবে এই রিউমারটা অনেকদিনই চলেছিল। তো সেটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং তথ্য এই গানটার সাথে। 1959-এ দ্বীপ জেলে যায় এই গানটা হয়। 1964-এ কোহরা ছবিতে হিন্দি ভার্সনটা এটার হয়, ইয়ে নেন ডারে ডারে। তো আজকে আমি এই গানটা চেষ্টা করব। এই রাত
তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, শুধু দুজনে এই রাত শুধু জেগানে, এই ক্ষণে দুটি প্রাণে কুহু কুজনে, এই রাত তোমার আমার। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। শুধু দুজনে ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो, এই রাত তোমার আমার। Among the things that I wanted to point out was, apart from being a terrific singer that he was a great composer. One of my all-time favorite Hemant Kumar compositions is Jhoom Jhoom Dhalti Raat, written by Kaifi Azmi for the 1964 film Kohra. Sung absolutely hauntingly by Lata Mangeshkar. Then there was another song that Hemant Kumar composed, and it was sung by Kishore Kumar brilliantly for the same Khamoshi. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है. नमस्कार दोस्तों, ये जो गाना मैं गाने वाला हूँ ये गाया है किशोर कुमार साहब ने और इसका म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार साहब ने। फिल्म का नाम खामोशी, और मैं समझता हूँ कि ये जो गीत है ये किशोर कुमार का सबसे उम्दा गीतों में से एक है। वो शाम कुछ अजीब थी। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोच
सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खुली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। I would like to thank the Global Village of Indian Music, GVIM, powered by Real Talkies Motion Pictures, for giving me this opportunity to be part of this wonderful program, Tum Pukar Lo, a tribute to the musical works of the legendary music director, Hemant Kumar. I have often wondered why, more often than not, Hemant Kumar gets pegged a bit below the all-time greats, such as, of course, Mohammad Rafi, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar. But if you listen to this song and many others of his, I think he was as good as any that he was a contemporary with. I personally find his voice remarkably soothing, like I'm sure many of you do. I believe his soulfulness had to do with the fact that he was an accomplished practitioner of the Rabindra Sangeet genre of singing. Someone who began singing at age 13, it meant that by the time he started singing for the movies, his voice was so vigorously trained and his muscle memory so sharp that anything that he sang became memorable. Singing was built into his life from a very early age. Hemant Kumar's was not a voice in search of a body. It was, like I said, a standalone voice. I could be wrong, but I suspect that part of the reason why he couldn't mold his voice to suit the personality of the actor he was singing for was because it was baritone. Of course, Kishore Kumar too had baritone, but being a very competent actor himself, I think he could get into the nuances of the actor's styles that he was singing for. Rafi, of course, had preternatural gift to become the actor he was singing for. Hemant Kumar, being as good a composer as a singer, created some enduring masterpieces of Hindi cinema. I can list many, but take just this one great but predictable song from the 1969 movie Khamoshi, which
he happened to not just produce, but compose and sang for. Here it is. तुम्हारा इंतजार तू पुकार ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है I grew up on a steady diet of Carnatic music and a lot of pop music, but occasionally there would be these lovely Bollywood tracks that would play at home. One amongst my favorite was this cassette of Hemant Kumar songs. My mom says that songs like Ye Raat, Ye Chandni Phir Kahan, Na Tum Hame Jano, those were my favorite, and that I would finish my milk and finish my lunch or dinner if those were played. That was some sort of a bribe mechanism that I used to use. Another favorite of mine was Sahib Bibi Aur Ghulam, and I remember all of these songs because it was a favorite. I would request to have it played over and over again. So when the good folks at Global Village of Indian Music told me that they were celebrating the 101st birthday of Hemant Da, it just felt that the right song to do would be a personal favorite from this very album. These songs are just amazing. They were created almost 60 years ago, and even today they have this freshness, the simplicity that you can admire and marvel at. So I've tried my hand at Bhavra Bada Nadan, which is a favorite. Wahida ji's expressions on screen and Asha ji's expression in the voice are a potent combination. I hope you like what I've attempted.
1954 সাল এস মুখার্জি একটা ছবি প্রযোজনা করছেন, তার নাম নাগিন। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি নিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা হেমন্ত কুমারকে। সমস্যাটা হলো তার বেশ কিছুদিন আগেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশ কিছু ছবি করলেও সেগুলো পর ফ্লপ হতে থাকে। নাগিন ছিল শেষ ভরসা। যথারীতি সময় মতো নাগিন মুক্তি পেল। সবাই খুব আশায় ছিলেন নাগিন হিট করবে, কিন্তু দেখা যায় যে নাগিন প্রথম সপ্তাহে জনশূন্য, দর্শকের দেখা নেই সিনেমা হলে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমাদ গুনলেন, কারণ তার আশা, সহায় সম্বল সব ফুরিয়ে এসেছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটাও যখন লাগলো না, তার মানে মুম্বাইতে হিন্দি ছবির জগতে আমার আর কেরিয়ার বলে কিছু থাকবে না, কিছু করার আর নেই। তাই তিনি ফিরে যাবেন মনস্থির করেন। যথারীতি বাড়ি ইত্যাদি প্রভৃতি যা যা কিছু ছিল সমস্ত কিছু হস্তান্তর করে তিনি ফেরার টিকিট কাটেন, এবং তার মধ্যে নাগিন পৌঁছে যায় দ্বিতীয় সপ্তাহেও জনতা সেই হলমুখ হয়নি, নাগিন ফ্লপ। যেদিন ওনার ট্রেন ধরার কথা সেদিন ছবি গিয়ে পড়ে তৃতীয় সপ্তাহে, এবং তার যাওয়ার দিন যখন তিনি স্টেশন যাবেন তখন এই সময় সুবোধবাবুর ফোন আসে, এবং মিস্টার মুখার্জি ফোন করে জানান যে প্লিজ দয়া করে যাবেন না, নাগিন হিট করে গেছে, নাগিন দর্শক নিচ্ছে, দর্শক আসছে, দর্শক টানছে ছবিটাকে। বাকিটা ইতিহাস। এরপর 3 সপ্তাহ পেরিয়ে যাবার পর নাগিন হয়ে যায় সুপার ডুপার হিট একটি ছবি, এবং মুম্বাইতে স্থায়ী আসন নেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी तेरे। So today we are going to do something that I do not think we usually do in a concert or a content or presentation. The song Ei Raat Tomar Amar, which is Ye Nayan Dere Dere, which was brilliantly and beautifully performed by Siddharth Dotto. Now this is such a wonderful song that one more artist of ours, we all know him, we all love him and like his music, Abhijit Ghoshal. Abhijita and Siddharth both have performed the same song on the same show today, but the treatment that they have given to the song is a little different. Siddharth has given a different feel and emotion and arrangement to the song, and Abhijita is singing this creation, the same song, in an unplugged and different arrangement. So we have already presented one version of the song, and now we are going to present the second version, one more version of the same song. I'm sure you all will enjoy this. Thank you. Abhijita, over to you. Namaskar, this is Abhijit Ghoshal from Mumbai, India. Global Village of Indian Music, along with Real Talkies Motion Pictures, they are celebrating the 101st birthday of the ever youth voice, the ever young voice of Hemant Kumarji, whom we Bengalis fondly call Hemantoda or Hemanto Mukherjee. I am also a part of it, and I am so honored and so happy to be associated with it. Though I don't sing or I don't sound like Hemantoda, I have a different texture of voice, but I have sung one song with only piano. Aniket Kar, Oni, is on piano, and the song is Ei Raat Tomar Amar, which all of you also know as Ye Nayan Dare Dare, Ye Jam Bhare Bhare. Most of you must be knowing that Hemantoda did many songs which were originally done in Bengali, and after that the Bangla to Hindi version was made, and most of those songs were as famous in Hindi. এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, একবার জরা ফির কহ দো
मुझे शर्मा के तुम दीवाना. That is also Bengali and Hindi versions, both are available. I'm very sure you will all love this concept and the concert, and please stay tuned. এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, শুধু দুজনে এই রাত শুধু যে গানে, এই ক্ষণে দুটি প্রাণে কুহু কুজনে, এই রাত তোমার আমার। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। শুধু দুজনে এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, শুধু দুজনে এই রাত শুধু যে গানে, এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের কুহু কুজনে, এই রাত তোমার আমার। Stay blessed, keep listening to good music. Namaskar. সে আছি পথছে ফাগুনের গান গে, যত ভাবি ভুলে যাব মন মানে না। বসে আছি পথছে ফাগুনের গান গে, যত ভাবি ভুলে যাব মন মানে না, মন মানে না। বেদনার শত দলে স্মৃতির সুরভি জলে, বেদনার শত দলে স্মৃতির সুরভি জলে, তৃষিতের মন বিনা
সুর জানে না, যত ভাবি ভুলে যাব, মনও মানে না, মনও মানে না। আজ তুমি নেই সাথে, ভুলে থাকা ছলনাতে, মনে মনে ভাবি শুধু তোমারই কথা, পাওয়া না পাওয়ার মাঝে অচেনার সুর বাজে, সুরভিত বিরহের মর্ম ব্যথা। তুমি ওগো তুমি মোরে বেঁধেছ যে মায়া ডোরে, তুমি ওগো তুমি মোরে বেঁধেছ যে মায়া ডোরে, সে বাঁধনে দুনয়নে ঘুম আসে না, যত ভাবি ভুলে যাব, মনও মানে না, মনও মানে না। বসে আছি পথছে ফাগুনের গান গে, যত ভাবি ভুলে যাব, মনও মানে না, মনও মানে না, যত ভাবি ভুলে যাব, মনও মানে না, মনও মানে না। There is so much one can say about Hemant Kumar, but let me just end with this 1956 gem from the movie Durgesh Nandini, which I'm sure many of you wouldn't even know it existed. He composed and sang for that movie. This particular was a duet, but I'm going to hum the Hemant Kumar part. And with that, here is to Hemant Kumar. कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है. Thank you so much, all of you, the artists and the speakers. Mangji, thank you so much for a detailed discussion on the genre of songs and the type of songs that Hemant Da has created and performed on. I'm sure the audience has loved these beautiful information. And Ashish, thank you so much. Tajuda, Devapratim Da. এই যে নাগিনের যে এই ছোট অ্যানেকডোটটা তুমি যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করলে আজকে, আই এম শিওর অনেকেই জানতো না, এবং আজকে তোমার কথা শুনে হয়তো অনেকে এই ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা জেনেছে যে কিভাবে কোনো সিনেমা বা গান শুরুর দিকে হয়তো হিট না হতে পারে, ফ্লপ হতে পারে, বাট অ্যাগেন ইউ নেভার নো, বাট ওয়ান্স ইট becomes a hit, once the success starts, then there is no looking back. And I think Hemant Da has been a unique example of that. We are so glad that we could gather here today and celebrate the 101st birth anniversary of the maestro Hemant Mukhopadhyay. Thank you so much, friends, for being there with us and enjoying the songs and this musical presentation
by us, our GVIM specials, Tum Pukar Lo, which is created by Global Village of Indian Music, which is powered by Real Talkies Motion Pictures and also presented by Bharat Media. Good night, Shubha Khair, Namaskar. एक छोटी सी कोशिश के साथ I'll sign off for the evening. Thank you. होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है पुकार लो तुम्हारा इंतजार है पुकार लो ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है